All right, Soji, this is our second lecture of the edit stresses in soil. So in our previous lecture, we learned about the Bossiness theory and we tried to look on few solution and we learned how to use those solutions practically in engineering problem. So there are few more solutions which are widely used in practice, and one of the very famous solution is 1:2 method, which is very quick and approximate method. Okay, these are not exact solution, but these are the approximate methods. The second one is the vertical stress below the arbitrary shape. So we will look into that, and I think that is called Newmark chart method. Newmark chart method. We will solve one example. Then, if there is a embankment which is neither rectangular and which is not plane and but has some height and thickness. Okay, so we will try to learn into the Osterberg charts and we will try to solve one edit stress component numerical problem by the Osterberg method. Then there are stress isobar charts and how to use those stress isobar charts. So let us see the first approximate method for the rectangular load. So please note down this approximate method you can only use for the rectangular load or the square load. Okay. And this is also known as 2:1 method or trapezoidal rule in geotechnical engineering. Okay. So this is not exact, this is approximate, but this is very quick and we often use this as a preliminary estimate, and you can use it on site to just see how the stress is transferred if you are in some meeting and if you want to have some idea about the value of the edit stress. It is very quick and you can see if this is the rectangular loaded footing. Okay, the footing has width B and length L and it has the intensity which is load is uniformly applied. If you will divide it by the area of the footing, you will convert it into the stress. Now you have to transform this stress to the any depth z where you want to calculate the added stress component due to this rectangular footing. So the z is the depth at which you want to calculate, and if this is the width, this will come b plus z. So I am not going to talk about the geometry, but this is the formula that added vertical stress distribution of at any depth z is equal to capital Q divided by b plus z multiplied by L plus z. So it means if I say there is a rectangular footing which has this much load, so you will convert that load into the intensity, then you know the dimension of the footing, you know the depth. I ask you to calculate at 5 meter or 10 meters, so you know B, you know L, you know Z, you know Q. So Q multiplied by, if you are given the intensity load per unit area, then you can multiply it with the area to convert it into Q. So this is how you can calculate very quickly using 2:1 method or the trapezoidal rule, and this is known as the approximate method. And in literature it has been reported that this is reasonably accurate compared with the Bossiness solution for depth greater than its width. So let us see one of the practical example. So suppose there is a building which has lot of isolated footing and one of the footing is 4.5 meter by 3 meter. Okay, or this is raft, or there are many type of the foundation which you will learn in the foundation geotechnical engineering next semester. Okay, so it says that there is a rectangular concrete slab and you have to calculate the added stress vertical increment at 3 meter depth. So z is 3 meter. Okay, and you have to note down that this method you can only use to calculate stress at the center, so you cannot use to calculate at any other at any location other than center.
using the approximate method. So when it says approximate method, it means that you have to use 2:1 trapezoidal method. So, and the load Q value is given to you is 2025. So simply you will apply the formula kilonewton, okay? And it's pretty simple to solve it. So the Q divided by 3 is the width plus 3 is the depth multiplied by 4.5 is the length plus Z. It means at 3 meter, due to this uniformly loaded rectangular foundation, the vertical added stress component will be 45 kPa. Any question? It's very simple, so I assume that every one of you is able to understand. Now suppose you don't have rectangular shape, you don't have circular shape, but you have a shape like this. This is the plan of the footing or the foundation, okay? When you see from top, it is like this. So you can see there is one rectangle, another triangle. So this is something we can call it not a regular shaped area. So if you want to calculate the stress, vertical stress distribution due to this arbitrarily loaded area, then how to calculate that? We have to use the Newmark 1942 method, which is known as Newmark chart method. Okay, so what happens in this method? This is the chart that will be provided to you. This is known as Newmark chart. So this Newmark chart is available with different influence value. अब किसी ने ये नहीं कहना कि Newmark chart हमेशा 0.005 I n के बराबर होगा. ये एक influence factor है 0.005. So this Newmark chart can be developed for 0.001. There can be any influence value. So for example, influence value is equal to 1 divided by n, and n is equal number of element in the chart. For example, this is one element, this is two element, this is third element. So if you see the Newmark chart is basically there are circles which are increasing if you go away from the center. So we call these as a centric circles, and these are divided by the radial lines. So you can see that these are the radial lines. Okay, these. Okay. Now each segment represent an equal portion of the applied stress at Z. This point I will explain you when we will solve one numerical example. So I hope that you are clear that why there is a need of Newmark chart method. So our structure or our any geotechnical structure can be of any shape other than rectangle, triangle or circle. So if it is an arbitrarily loaded shape, then you cannot use those methods. So you have to use this Newmark chart method. So Newmark chart method has one influence value which is always given on the chart. So this is known to us. Okay, sorry. Okay, so this is basically known to us. Okay, and now let us see how to solve or how to use this Newmark chart to calculate the added vertical stress component below uniformly loaded arbitrary shape. So this procedure will be more clear when I will solve a problem, but this is the equation. This is the magnitude of the added vertical stress at any depth Z, and this is vertical stress again. Qs is the intensity. I subscript n is basically the influence value of the chart which will be provided on the chart. सो ये जो आपको ग्राफ या चार्ट गिवन होगा उसके ऊपर ये वैल्यू गिवन होगी, लिखी हुई होगी 0.005, 0.01 और 0.00001. Okay, now you have to calculate n subscript s, which is the number of the segments which are loaded by your footing or foundation or structure. So let's see how to use this practically. Okay, so suppose there is a raft foundation which has the uniform thickness for the building, and the applied uniform load or the Q or the intensity or the load per unit area is 200 kPa. So
this is the shape of the raft, which is 10 meter long. Then on one end it is 1 meter, on another end this is 2.5, this is 2. So you can see one rectangle, two rectangle, three rectangle. Now you can imagine that this is the centroid, or this is the centroid. Okay, so okay, so you can see that this is x values, these are y values. Now if I say to calculate the centroid, which may be located somewhere here, then you have to use the surveying, in which you use the trapezoidal rule. You took the moment of the area divided by area to calculate the centroid. I don't know if you have solved this problem or not, but let's see how to solve this. Now you are asked to calculate the vertical stress of this arbitrarily shaped uniformly loaded footing at 4 meters. So Z is given to you. So the first step is to locate its centroid. So it means the center will have two coordinates. One is x1 and the second one is y1. Now let us see how to calculate the centroid x1 and y1. So if you want to calculate the centroid coordinate x of this point, then you have to take the movement of all the areas about y-axis. For example, the movement of area 1 about y-axis कौन बताएगा क्या होगा? Mehran? 10 into 5. Anyone else? 5, sir. 5 क्या होगा? 5. What is 5? 5 इसका लेंथ So, होगा. okay, area 1 10 into 5. area 1 will be 10 multiplied by 1 multiplied by the moment arm of area 1 will be 5 meter from here to here. Okay, so similarly, so you can see k 1 multiplied by 10. Similarly, area 2 will be, this is 1.5 multiplied by 2, length into width multiplied by movement arm, which is about y-axis is 1 meter. Similarly, you can calculate the area movement of triangle, which is area of the triangle is half into base into height multiplied by 2, 1 by third will be from here. Okay, so this is how you will calculate the and you will divide by the all the areas. So anyone have any question related to how I calculated x bar? Similarly, you will calculate the y bar. So for y bar, you have to calculate the, you have to uh, first calculate the movement of areas along x-axis. Now you will take, for example, if this is area 1, which is 10 multiplied by 1, its movement arm will be, so here it will be located, and about y-axis it will be 1.5 plus 0.5. So this is how you have to multiply. Okay, because you have to calculate it by from on this axis, on y-axis you have to take the movement, because you know the movement arm has a 90 degrees. So for area 2 you have area 2 as a 1.5 multiplied by 2. So you will, okay, now someone may ask, okay, first what you have to do, first you have to assume the centroid. So centroid ye hai. Let me change the color of the pointer. तो सेंट्रॉइड ये है, यहाँ पे आप ले रहे हैं. तो एरिया 1 आपका 10 इंटू 1 और अबाउट वाई एक्सिस ये हो जाएगा 1 by 2.5. So this is how here you are having 0.5. So for area 2 you have 2 multiplied by 1.5 because this is your area 2. Okay, so 1.5 divided by 2, it will be 0.75 plus 1. So this will be its moment arm. Okay, so this is how you will calculate the area movement of the areas. Then you have to divide by the areas. So
It means that the centroid of this arbitrarily shaped area will be 4.26 and 1. So you can write that x1 or the x coordinate is 4.26 and the y coordinate is 1. So this is likely to be located somewhere here. Any question how I calculated the centroid of this shape? All right, so after calculating this centroid, then you have to plot this on a Newmark chart. Now, how to plot on a Newmark chart? So the center of this area should be located over here. So it means that this represent, agar mera center hai, okay, so this is the center which is 4.26:1. ये मैंने center वाला dot locate किया, okay. अब अगर मैं ये वाला पॉइंट ड्रा करना चाहता हूँ न्यू मार्क चार्ट के ऊपर, तो आपको पता है कि ये 0 0 है, ओके, दिस इज 0 0, बट फ्रॉम दिस लोकेशन दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट -4.6, ओके, एंड 1. सो यू कैन सी कि अब मैंने सेंट्राइड न्यू मार्क चार्ट के ऊपर ये वाली जो लोकेशन है ये मैंने चार्ट के मिडल में प्लॉट करनी है, और अगर मुझे ये वाला पॉइंट लोकेट करना है न्यू मार्क चार्ट के ऊपर, तो अब मेरा 0 0 इज दिस वन, ओके. सो यू हैव टू लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द कॉर्नर. सो दिस कॉर्नर इज लोकेटेड एट -4.26 एंड 1. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ स्केल, ये आपके पास स्केल होगा, वो स्केल से आप यूं मेजर करोगे -4.26 और यूं वर्टिकली मेजर करोगे 1, and you will locate one point. Suppose that point is this one. So this is your 0 0 on the Newmark chart. Then you have to locate this point. कौन बताएगा कि इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? So this will be 10 minus, okay, 4.06, 4.26. So this will be 5.74. This is, sorry, this is mistaken. This is plus. Okay. And above this zero line, there will be 1. Again, you will take a scale. आप scale यहाँ पे centroid पे रखोगे और आप plot कर दोगे 5.74 सेंटीमीटर या जो भी आप ले रहे हो is to 1. Scale आपने consistent लेनी है. Then you have to locate this point. This point y has been 0 and x is plus 7.54. Similarly, you will take a scale or it should be located somewhere here. So you can see this. Then you will locate this point. So this point will be located at -4.26 and -1.5, because below centroid you will take now y as a negative. Again, you will place scale like this, and you will locate this point. Similarly, you will locate the coordinate of this point, okay. Similarly, you will locate this point over here, जो मैंने नहीं किया, suppose वो यहाँ पे आता है, और figure like this. So after locating, आप ये देख लें कि ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये 10 सेंटीमीटर आया, यानी कि स्केल जो हम न्यू मार्क चार्ट के ऊपर ले रहे हैं वो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब है अगर मैंने 4.26 सेंटीमीटर मीटर प्लॉट करना है, तो आई हैव टू प्लॉट 4.26 सेंटीमीटर टू लोकेट दिस पॉइंट. नाउ आफ्टर लोकेटिंग दिस इंटायर डायग्राम, यू हैव टू कैलकुलेट कि इसके अंदर कितने स्क्वायर आ रहे हैं. ये जो इक्विलिनियर स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके. सो यू कैन काउंट दिस एज अ 0.75, you can count this as a half. So you have to calculate number of the segments inside this diagram. So those are 58.8. and I told you कि अगर इसमें डायग्राम को आप 0.5 ले सकते हैं, इसको 0.75 ले सकते हैं, इसको 0.5 ले सकते हैं, ठीक है. You can take this as a 0.95. So this is something approximate you have to count down. So number of the segments are 58.8. Now you are given QS, you know the influence value from this chart IN, which is known to you. You calculated
NS, so it means के delta sigma z added vertical stress will be equal to QS multiplied by IN multiplied by NS. So this is how you will calculate that the stress below 3 meter will be okay approximately 58.8 kPa. Any question related to this problem कि ये कैसे solve हुआ है? सर ये स्केल जो हमने लिया हुआ है सर, तो ये फिक्स्ड स्केल है या हम कोई और भी दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से तो फिर ये फिगर छोटा और बड़ा हो सकता है. This is up to you. I don't mind. So you have to take scale. You can take Okay. any scale. ठीक है? Any other question? All right. So I will give you this new chart and you can do a practice. Okay, I will give you some practice examples. So make sure that you are able to solve it. Yes? ऊपर जो डायग्राम है वो पेंटागन है. आपने एक साइड छोड़ के मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि एक कौन सी साइड छोड़ना है? कौन सी साइड छोड़नी? कौन सी साइड छोड़ी है? सर आप ये ऊपर जो शेप है वो पेंटागन है, मतलब 5 साइड है उसकी. इसे होल अगर मतलब उसकी बाहर से. किसी को क्वेश्चन समझ आ रहा है स्टूडेंट का? सर वो आपने नीचे वो एक साइड छोड़ी, वो जो रह गई थी आपने ऐसे मेंशन किया, वो इसका बोल रहे हैं. ये 2.0 मीटर का जो लाइन है सर, ये वाली लाइन, ये लाइन ना, ये तो मैंने मिस्टेकनली, ये आपने प्लॉट करनी है, ये मैंने छोड़ी नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिस्टेकनली मैंने ये प्लॉट नहीं किया पॉइंट इधर. ओके, बट यू हैव टू प्लॉट इट. यही आपका क्वेश्चन है? यस सर. Okay, all right. So I hope the new March chart method is clear to you, but still I will provide you more example, and then once you will do it, you will be more clear. But still, if there is any question, you can contact me back through Teams, okay? Now let us see embankments. So what are embankments? So embankments are basically, जब आपने देखा होगा कि अगर ये ground level है और यहाँ पे रोड्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह के, तो सपोज दिस इज एन एम्बैकमेंट या एम्बैकमेंट तरबेला डैम का. देयर आर डैम्स, देयर आर एम्बैकमेंट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द कैनाल्स, ये जो नहर हैं आपके पाकिस्तान के अंदर. एनीवेज, सो दिस इज नोन एज ऑस्टरबर्ग चार्ट. सो ऑस्टरबर्ग चार्ट का एक एक्सिस है B2/Z और जो कर्व हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं B1/Z. Z is the depth at which you are required to calculate the added vertical stress. और B1 है जो ट्रायंगुलर पोर्शन, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपकी ट्रेपोजाइडल का, उसकी विड्थ. और B2 है जो ट्रायंगुलर पोर्शन है आपकी ट्रेपोजाइडल का, उसकी विड्थ. ओके, सो B1/Z, B2/Z you can calculate. If you know B1/Z and B2/Z, so you can suppose if this is your B2/Z, if this is your B1/Z, so you will plot like this and you will calculate I2. So if you multiply this I2 and the intensity of the load or the load per unit area is equal to unit weight of the soil multiplied by the thickness or height of the embankment, जो कि ये है, उससे आप Q0 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्ट्रेस एट दिस पॉइंट Z due to this embankment loading by using the Osterberg chart will be equal to I2 influence factor multiplied by Q0. So this is how you calculate the vertical stress added component due to the embankment loading at any point. Now let us see a practical example in which you are given embankment. So see, this is the embankment. Okay, it has width B, it has one end, so this is up to here, so don't get confused. Okay, this is because of the presentation. This is 15 meter and this is 20 meter. Okay, now let us see how to solve this problem. Now to make this figure look like the Osterberg, I need to make this diagram something like this. अगर आप देखें ऑस्टरबर्ग की, तो इसके अंदर एक ट्रायंगुलर पोर्शन है और एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है. तो इसका मतलब है कि मुझे ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी. ओके, सो इफ़ यू सी
this is I'm just adding to use this plot. Later I will deduct this from this entire diagram. तो ये जो 15/10 है ये हमने ऐड किया है ताकि ये वाला स्केच एग्जैक्टली इस डायग्राम जैसा बन जाए. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. तो आप देखें कि ये जो वर्टिकल पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, वो बेसिकली उसके बिल्कुल नीचे लोकेट हुआ पॉइंट है जहाँ पे आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, और हमने स्ट्रेस 6 मीटर बिलो दिस पॉइंट कैलकुलेट करनी है. और हम तभी ये डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं जब हम इस डायग्राम को इसके इक्विवेलेंट बनाएंगे ऑस्टरबर्ग की डायग्राम के. सो दैट्स व्हाई ये डॉटेड लाइन में जो हमने शो किया है, दिस इज समथिंग वी आर एडिंग बाय आवर ओन सेल्फ. ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट मी शो यू. अब अगर आप ये देखें तो कौन बताएगा कि व्हाट इज द B1 in this diagram. B1 is basically this. So 15 plus 6 is 21. B1 is 21. And what is B2? B2 is 20. Okay, and what is Z? Z is basically 6 meter, which is given to you. Okay, now unit weight is given to you, and if you want to calculate Q, then you have to multiply it with the 18 multiplied by 10. So this will be Q. So since you know B1, B2, Z, so you can calculate B2 by Z and B1 by Z. Okay. Now I will explain you how to solve this. So for this diagram, you have delta sigma Z equal to Q naught times I2. So आपको B1 B2 by Z पता है, उससे आप इन्फ्लुएंस फैक्टर निकाल लेंगे. सपोज आपका ये इन्फ्लुएंस फैक्टर आया या ये आया, ठीक है, और उससे आप डेल्टा सिग्मा Z कर लेंगे कैलकुलेट. अब मुझे इस डायग्राम में से ये वाली चीज़ जो मैंने खुद से ऐड की है इस फिगर में, ये मुझे डिडक्ट करनी है, ये 15/10. सो लेट अस टेक अ ट्राइंगल ऑफ 15/10 and let us try to solve it. तो 15/10 के अंदर हमारे पास B1 क्या है? B1 we already know for this diagram is 15 meters. Okay, and B2 is 0. अगर आप ये देखें डायग्राम क्लियरली तो इसके अंदर B2 क्या आपका 0, क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन है ही नहीं. ओके, सो and Z is 6 meters, so you can calculate B1 by Z, B2 by Z, and similarly you can calculate I2 for this. So it means that whatever delta sigma for this minus delta sigma this will be the solution of the entire problem. Any question ke how I solved this problem of the embankment loading using the Osterberg's chart? So please note that you have to take care of this location. Yes. Sorry, chart explain. तो सही चार्ट की समझ नहीं आई B1 और Z और ये लाइन. Can you please first learn? I told everyone in my last lecture you should learn how to speak in front of a mic online. ठीक है? I can't hear you कि आप क्या कह रहे हैं. Can you repeat your question? Hello. आप रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन? या सर मैं कहता हूँ कि ये जो चार्ट है सर समझा दी B1 और Z B2 Z इससे इन्फ्लुएंस फैक्टर सर कैसे निकालते हैं सर, ये समझाइए. Okay, all right. So who would like to explain this chart? Any student? ऑस्टरबर्ग का चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर चार्ट में हमारे पास सर जो ये जो लाइंस है, सबसे पहले लाइंस आपके पास प्रॉब्लम होगा, ये बताएं आप. सर प्रॉब्लम होगा हमारे पास एम्बैंकमेंट का, सर डैम एम्बैंकमेंट का होगा. उसमें हमारे पास सर दो लेंस होगी, एक B1 होगा और एक B2 होगा. ये B2 जो इंक्लाइंड है इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा वही B2 होगा, और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो B1 होगा. तो सर फिर ग्राफ में हमारे पास जो x एक्सिस है इस पे हमारे पास B2/Z की वैल्यू, Z सर एम्बैंकमेंट से नीचे वाला जो लेंथ है इसका है. तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे. You are a graduate engineer first. This is width
and this is depth at which you have to calculate this stress. So there is no word length. Okay, now you can continue. सर ये हॉरिजेंटल एक्सेस सर, चार्ट के हॉरिजेंटल एक्सेस पे हमारे पास सर विड B2 एंड सर ये डेप्थ Z, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसे हम इस लाइंस के कॉरिस्पॉन्डिंग फिर हम उसे ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो फिर हम उसे मैच करेंगे कि ये विड B1 डिवाइड बाय डेप्थ Z, ये जो लाइंस है सर इस पे कौन सी पॉइंट पे वो करिस्पॉन्ड करती है सर। तो जिस लाइन से भी वो क्रॉस करेगी हम उस लाइन की वैल्यू जो वर्टिकल एक्सेस पर है वो हमारे पास फिर I2 की वैल्यू आ जाती है सर उससे, तो हम फिर उसे इक्वेशन में यूज़ करके अपना स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं सर। ओके, नाउ सी, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो अपने आप को अनम्यूट करेगा 1 मिनट के लिए। हेलो, ओके, अब सपोज आपका B2/Z जो है आपके प्रॉब्लम से वो आ गया 0.1, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दोगे यहां से, ठीक है, दिस इज। उसके बाद आप अपना कैलकुलेट करोगे B1/Z। सपोज योर B1/Z इज 1.15, वो आपका आ गया 0.15। इसका मतलब है कि इंटरपोलेशन करके आप एक कर्व प्लॉट करोगे यूं इन दोनों कर्व्स के दरमियान, ठीक है। फिर आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे एंड दिस विल बी योर इन्फ्लुएंस फैक्टर विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.125। इज इट क्लियर नाउ? हेलो, Yes, sir. सर इस दरमियान में लाइन ड्रा ओके, प्लीज यू नीड टू गो बैक टू योर एलिमेंट्री स्कूल के अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल ये 0.2 को रिप्रेजेंट करती है और ये 0.1 को रिप्रेजेंट करती है लाइन, तो आपकी अगर B2/Z 1.5 है, ओके, तो इसका 0.15 है, तो इसका मतलब है कि आपको इन दो लाइंस के दरमियान एक कर्व खुद से प्लॉट करनी होगी। और अगर आपका 0.2 है तो फिर तो सिंपली आप यू इंटरसेक्ट करेंगे। So since you are in university level, so I thought that you already knew कि how to read graphs, but still if there is any confusion, so you can ask. Is it clear now? सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं सर, ये कहाँ से ड्रा करेंगे? ये तो कहीं से भी ड्रा कर सकते हो इस लाइन पे। Okay, wow. Okay, let me repeat it again. So where you did your FSC? Hello? एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर सर। Okay. So have you ever plotted any graph in your FSC? यस सर। ओके, नो इशू। सो सी, ये आप एग्री करते हो कि B2/Z एक वर्टिकल लाइन होगी, यहां से कोई भी हमने लाइन प्लॉट कर दी, क्या नाम है आपका, ठीक है, ये एग्री करते हो आप? यस सर, यस सर। अब आपके पास B1/Z की कोई वैल्यू आएगी, राइट? राइट सर। वो फर्ज करो 0 आई है। हेलो, ओके सर, ओके सर, ओके तो सर। मैं यहां से लाइन ड्रा करूं अब? आप जवाब देना। नो मेरे सर, यहाँ से B, तो नहीं। तो यहां से करूं? हेलो, नो सर, यहाँ से भी नहीं। तो कहां से करूं? एक्सिस पे सर, एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है। प्लीज सी के ये जो आपकी ब्लू लाइन है इसको रेड लाइन ने इंटरसेक्ट किया, आपका B1/Z अगर 0 है तो इसका मतलब है आपका ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। आपका नाम क्या है? सर जिहाद आलम। अच्छा जिहाद, आपने बुरा नहीं मनाना, ठीक है। ये पॉइंट आपको एग्री करते हैं कि आपकी जो कर्व है B1/Z वो 0 आई है, तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ये बात। यस, तो यहाँ यस से सर, आपने यस। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू होगी। जिहाद, अब आपको समझ आइए? थैंक यू सर, थैंक यू, आ गई समझ सर। थैंक यू। और जहाद, अगर आपकी वैल्यू 0.15 है B1/Z, फिर आप क्या करोगे? ये तो 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है,
तो जिहाद आपकी वैल्यू 0.15 है, पॉइंट अब वन आप और क्या पॉइंट टू के दरमियान, पॉइंट वन और पॉइंट टू के दरमियान सर कोई तीसरी वो लाइन लेंगे और उसको जो ऐसे है ड्रा नीचे करें। करोगे लाइन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब सर यस सर, थैंक यू। ओके, बुरा नहीं मनाना आपने, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो यू शुड आस्क, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट। एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? तो Jihad and everyone, I want you to solve all the examples given in the BM Das book related to this Osterberg chart. And if still you have any confusion, you can contact me back. All right, so you learned the approximate method, you learned the Osterberg chart, you learned Newmark chart and how to use that. Still, you need to do practice related to the Newmark chart. Now, let us learn the new chart which are known as isobars. Okay, so what happens in isobars? Iso means the same. So, for example, if this is the line, this line represent the same level of the stress. ये जो बल्ब आपको नजर आ रहा है, ये सेम लेवल ऑफ द स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम आइसोबार कहते हैं। और ये सिग्मा सबस्क्रिप्ट z इज इक्वल टू 0.1 टाइम q। इफ दिस इज द पॉइंट लोड, तो ये अगर आपने इस पॉइंट लोड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.5 के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो कि एक नॉर्मलाइज डिस्टेंस, आई थिंक दिस इज b by z, I need to look into this, okay, b by z, or this is maybe uh, this must be 2.5 z. I need to look into exact use, but anyways, this would be more clear. Yes, this is more clear. Okay, give me just 1 second. Yes, let me make it like this. Okay, so let me write the title of the axis. So please note, this is x by, this is x, okay, and this is z by b. Because point load has no width, so it doesn't matter ke, so this is simply x value, and this value represent simply z value, depth. ये depth है, ठीक है। You can take it in meter, feet. I need to look into the unit of this plot. So this plot is not very clear. Let us look into this plot. You will be able to clear your concept of stress isobar. अगर आप ये देखें तो ये एक सर्कुलर फुटिंग है जिसका डायामीटर है b, ओके। और ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये नॉर्मलाइज्ड एक्सिस है। एक्स वो डिस्टेंस है जहां पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फुटिंग, और बी है डायामीटर ऑफ द फुटिंग। और जो वाई एक्सिस है, ये वो डेप्थ है जी जहां पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय बी। सो सपोज आपके फाउंडेशन का डायामीटर है 2 मीटर, ओके, 2 मीटर, और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सेंटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपका x क्या हो जाएगा, 0, ओके। और आप जो डेप्थ है वो आपकी है सपोज 3 मीटर पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स के इट विल बी z विल बी 3 मीटर। नाउ x by b will be 0 by 2, so it means के this is the x location. Now z by b, which is basically depth, diameter, sorry. So this will be 3 divided by 2 means 1.5. So 1.5 means this one. Now you can see that this is 0.2, this is 0.1. So you can approximately plot another, by interpolation you can plot another stress contour like this, and we can call this K sigma by q is equal to 1.5. तो ये जो
ईच कंटूवर है, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है सिग्मा बाय क्यू। ये 0.2 क्या है बेसिकली, ये है सिग्मा बाय क्यू, और इसका मतलब है कि वर्टिकल स्ट्रेस, एडिड वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द uniformly loaded circular footing at the center at 3 meter depth will be 1.5 times the load per unit area Q. Any question कि ये stress isobar क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं? This is for point load. I will tell you कि what does this x-axis represent, what does this y-axis represent, ठीक है? लेकिन ये आपको मैंने बता दिया है कि सर्कुलर के लिए कैसे यूज करना है. Now let us see for the rectangular area. Again for rectangular area you have the y-axis, you have the x-axis. और ये स्ट्रिप लोडिंग के लिए, स्ट्रिप लोडिंग उसको हम कहते हैं कि जो आउट ऑफ प्लेन, फॉर एग्जांपल बहुत लंबी वाल है, देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वाल, ये जो आपके घरों की दीवारें हैं, तो दैट हैज़ अ ह्यूज लेंथ एंड वेरी स्मॉल विड्थ बी. सो यू कैन इमेजिन के L by B ratio is very very high. Okay, that's why we call that as a strip footing or strip loading. So अगर कोई strip loading है जिसका load Q है जो कि uniformly distributed है और B उसकी width है footing की, okay, तो how to use this graph? Again suppose there is a approximately 0.2 meter, suppose is B the width of the strip footing, okay, and you are asked to calculate जो है ना इसके सेंटर से, सपोज आपको वो कहते हैं कि 2 मीटर के ऊपर आप कैलकुलेट करो स्ट्रेस और 6 मीटर डाउन ZS 6 मीटर, ओके. नाउ दिस ग्राफ इज बेसिकली हाउ टू यूज दिस ग्राफ. सो आप इसके स्ट्रेस कंटूवर पढ़ रहे हैं, डेल्टा सिग्मा Z by Q is equal to 0.9, 0.7. So you have to normalize the depth Z by B. Okay, आपको ये कैलकुलेट करना है Z by B. वो जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने डेफिनेटली ये वैल्यूज कैसे यूज करनी है आगे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है. Similarly you will calculate the x coordinate. So suppose if this is your one point, this is your another point, okay, so this is how you will select this stress contour and you will multiply this Q with the 0.2 and it will give you the added stress component for this. It means कि जो भी आपकी footing होगी उसका stress isobar given होगा. It will be more clear when we will solve the numerical examples. Let's see for the UDL. ये एक uniformly distributed load है. Similarly इसका एक y axis है, इसका एक x axis है, ठीक है, इसकी width b है, and you have to calculate the stress contour and you will multiply it with the in order to calculate the added stress component. Now let us see कि इसको practically use कैसे करना है. Suppose आपके पास एक water tank है जो circular है, okay, and you have to compute the stress component or the stress increment due to the added loaded at 10 meter below the edge of 25 meter डायमीटर वाटर टैंक, और वाटर टैंक का आपको मैस गिवन है. अब एज का क्या मतलब है, 25 मीटर डायमीटर अगर वाटर टैंक है तो एज का मतलब होगा, इसका मतलब है कि दिस इज द वाटर टैंक एंड दिस इज द सेंट्रॉइड, सो दिस मीन्स कि x मस्ट बी इक्वल टू 25 divided by 2. But I need to check is it right or not, and Z is given to you is 10 meter. Okay, so mass आपको given है, आप यहाँ से calculate कर सकते हैं, stress weight calculate कर सकते हैं, फिर उसे आप convert कर सकते हैं. Let's see, weight is equal to mg से आपके पास आ गया for example 59,800 Newton. Then you divide this weight by area of the circular tank, okay, and this will be equal to 122 kPa, which is equal to Q, stress per unit area, load per unit area, okay. Then I told you कि you have to calculate Z by B.
So Z is basically the depth at which you have to calculate the stress, and B is the width. So this will come 0.4. Then you have to calculate X. X क्यों आया आपका 25 मीटर? क्योंकि वो कह रहा है कि एज पे कैलकुलेट करें. सो नॉट एट सेंट्रॉइड. अगर ये सेंट्रॉइड कहता तो X बाय B आपका जीरो आता. अगर वो कहता कि इस लोकेशन पे तो यू कैन कैलकुलेट. अगर वो कहे ये लोकेशन, यू मे कैलकुलेट एट एनी वैल्यू ऑफ X बाय B which is 0.5. then you will be provided with this isobar in exam. Okay, so अब आपने कैसे ये यूज करना है कि फॉर एग्जांपल आपका z by b है 0.4. so z by b is 0.4. so this means I think this one, if I'm not wrong. Okay, this is 0.4 and x by b is 0.5. so x by b is 0.5. so it means okay, this is your stress contour value 0.4. अब 0.4 क्या है? बेसिकली आपका सिग्मा बाय क्यू. ये हर वैल्यू जो इस कंटूवर पे लाइन पे रिप्रेजेंट कर रही है वो सिग्मा बाय क्यू है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.4. नाउ यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वेट ऑफ द टैंक. Okay, and you divided by area and you calculated the load per unit area or the stress, which is 122 kPa. If you multiply 122 kPa, so you will get the added vertical stress at 10 meter depth due to this oil tank or the water tank, whatever is this one. Any question how I use this stress isobar? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? जिहाद, is it clear now? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Okay, I hope you don't mind. Okay. No, sir. My mind Okay, will good. sir? Yes, yes, please. सर ये प्रीवियस स्लाइड पे जो सर चार्ट है और सर ये वाला चार्ट, ये दोनों सेम है? मतलब इनको जस्ट हाफ पे डिवाइड किया हुआ है? This is very good question कि अगर आप ये देखें तो ये किसके लिए है? ये सर्कुलर लोडेड एरिया के लिए है. ओके, और ये किसके लिए है? ये आपके पास है यूनिफॉर्मली लोडेड स्क्वायर एरिया के लिए. ये किसके लिए आपके पास? यूनिफॉर्मली लोडेड स्ट्रिप लोड के लिए. ठीक है. सो ये वाला किसके लिए आपके पास? ये पॉइंट लोड के लिए है. तो मैं ये सारे चार्ट अगर मैं एग्जाम में ये दूंगा तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू चार्ट एंड देयर एक्सिस to read the stress contour. Any question now? Fahad, is it clear now? Yes, sir. Thank you, sir. Any other Excuse me, question? sir. Yes. सर जो रेक्टेंगल के लिए जो ग्राफ है उसमें जो वैल्यू लिखे हुए हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, उसमें 2b x भी कुछ इस तरह लिखे हुए हैं पे. जी जी. सर इससे क्या मतलब है? मतलब इससे हम वैल्यू किस तरह निकालेंगे? Okay. First, I will give you one example in which you will be given the width of the footing, okay, and then you have to normalize it, and how to use it. It will be more clear when I will show you an example. ठीक है? क्या नाम है आपका? असदुल्ला. ओके, सो असदुल्ला, अगर आप ये देखें तो ये एक्सिस होता है आपका x बाय b. ओके, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कॉमन सेंस के तौर पे. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपने इससे b पे मैप करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा. लेट्स एलिमिनेट b बिकॉज b मैंने इधर डिवाइड कर दिया. असदुल्ला, आप क्लियर हुई है ये बात आपको? और इस एक्सिस को मैं कह देता हूँ कि दिस इज z बाय b. तो अब आपने क्या किया कि यहाँ से b की जगह आपने 1 लिख देने और आपने यहाँ पे b कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल. अब असदुल्ला क्लियर है कि आप यूज कर सकते हैं ये प्लॉट? यस सर. अभी कुछ किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज आस्क. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. एनी अदर स्टूडेंट? All right. So if there is still any question, you can contact me anytime, okay? And have a good day. And this is the assignment, so please try to solve this assignment. And I will upload the new mark chart for you, which you can use, okay? All right. So have a good day. Sir.